ये जो फिल्म जो बनाई है वो विक्टर जी ने लिखी है और विक्टर ने डायरेक्ट भी की है। बहुत मज़ा आया हम सबको काम करके। और हाँ, पता नहीं गलती से विजय कृष्णाचार्य का नाम कैसे आ गया यार। नहीं, दरअसल इनका ही नाम विजय कृष्णाचार्य है, विक्टर है, हम लोग प्यार से विक्टर बोलते हैं। तो प्लीज़ एनी क्वेश्चंस यू हैव, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस एंड वी आर मोस्ट एंग्शियस एंड एक्साइटेड। थर्ड पार्ट आ गया है फिल्म का इस तरफ। हाय, एसीपी जय दीक्षित का प्रमोशन हुआ है या नहीं फाइनली? G, you answered the question in your question. He's still ACP Jay Dikshit. We'll ask Aamir to help us to get him promoted. But nahi, third film he's still an ACP. मुझे पकड़ने के बाद जरूर डीसीपी बन जाएंगे। वेल, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी क्योंकि आई एम प्लेइंग ए जिम्नास्ट, तो उसके लिए एक किस्म की फिजिक चाहिए और सर्कस की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग थी। तो इट वाज हार्ड वर्क, आई हैव टू एडमिट इट वाज हार्ड वर्क। और काफ़ी 1-2 साल तक मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना पड़ा, ट्रेनिंग करनी पड़ी। जी, मर्द को दर्द नहीं होता मैडम। क्या बात है, क्या बात है। स्क्रिप्ट के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी पहली दफ़ा तो मैं आई वाज रियली एक्साइटेड। और मैंने धूम 2 नहीं देखी है, लेकिन मैंने धूम 1 देखी थी, मुझे बेहद पसंद आई थी। आई रियली एंजॉयड इट, आई रियली फेल्ट एंटरटेन्ड। समहाउ आई मिस्ड धूम 2। बट जब विक्टर ने मुझे कहानी सुनाई धूम 3 की, तो आई वॉज रियली अमेज्ड कि किस तरह से धूम फ्रेंचाइज में भी एक जज्बात लाए हैं और इतने अच्छी तरह से लाए हैं। और जज्बात भी आए हैं, इमोशंस आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका थ्रिल है वो बरकरार रहा है। So I really enjoyed the script. It's a very high point in any actor's career when suddenly your phone rings and you pick it up and it says Aamir Khan on it. I'll never forget that because the first time he called me, I was shooting in New Zealand, I remember. And for a matter of fact, Adi had also not told me that we're making Dhoom 3. So Aamir had called me and said, it's super. So I said, बहुत अच्छी बात है. I didn't know we're making Dhoom 3. Adi had not even told me कि भैया ये बना रहे हैं. And he said, we must meet and we must discuss. तो मैंने कहा कि हाँ जी, मैं न्यूजीलैंड में हूँ, मैं लौट के आपसे मिलता हूँ। And I had no idea कि ये पिक्चर बनने वाली है, who's doing what is happening. But even before we heard the script started, even our rehearsals, he was so excited and he's maintained that throughout. So it's just an absolute pleasure to be on set with him and learn from him. It's great fun. Abhishek, you worked now with, after John, Hrithik and now Aamir. Who has been the most difficult character for Jay Dikshit, for your character, among the three, if you had to, kind of rate them? Well, I think like Aamir said a while ago, this is the first time we've brought a certain edge to Dhoom, as you can probably see in the trailer. Dhoom 3 has got a bit more emotion than the Dhoom franchise is used to. It's a bit edgier. I've had fun catching all three actually. So it's been a challenge. I think Dhoom 1 was made with a different goal in mind. It was, 3 young guys, a young director, a young writer. We were young then, Victor. Yeah. Aamir, we set off. Nobody actually thought when we were making Dhoom 1 that it would turn into this huge franchise. And then we came with Dhoom 2 where we needed a larger challenge. And Dhoom 3, the only brief was make it bigger and better. I think we've achieved that. I can't say which one was more difficult to catch. I think they were all different circumstances. So they're all very different. The 3 villains have always been very different from each other. There's no similarity between them. And I really think Aamir this time has pushed the envelope beyond what even we thought was possible. And full credit for him for doing that. I think he's done a brilliant job. I said it before we started shooting. I think he's done brilliant, memorable films. I think this will be his biggest and most memorable. हड्डी मेरी नहीं टूटी। स्टंट्स देखिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे और मुझे भी लगता है अच्छे आए हैं। और जो हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर थे, ज़्यादातर जो मेरे स्टंट्स हुए हैं, मेरे चेस सीक्वेंसेस, थ्रिल सीक्वेंसेस सारे शिकागो में हुए हैं। तो वी हैड a stunt person from LA, but they were very safe in the way they were working. तो कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, I hope. And the scene in which Katrina has to put her leg on your shoulder. She must have been nervous. How many takes did she have to do? Actually, Katrina is a fantastic dancer. She is extremely flexible and supple. So I don't think she had a problem. She had absolutely no problem. आमिर, ये श्वेताब ABP न्यूज़ से नर्वस मैं था एक्चुअली, उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम थी। आपने क्यों चुना विलेन बनना, वो भी धूम के साथ? तो जाहिर है कुछ आमिर को इसमें दिखा है। वो पॉइंट क्या है जो मुझे कहानी बहुत पसंद आई, मुझे बेहद पसंद आई कहानी।
और it's something that really touched me, excited me in every way. और धूम में मैं एक्चुअली क्लैरिफाई कर, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू हैव द रॉन्ग इंप्रेशन. जो आमतौर पे जो हिंदी फिल्मों के विलन होते हैं उस किस्म का विलन होता नहीं धूम में. एक्सेप्ट आई थिंक in Dhoom 1 he was more conventional black and white villain. But so I don't want people to feel कि कुछ मैं विलन का रोल कर रहा हूँ जो एकदम ब्लैक है या जो बहुत बुरे काम करता है, उस किस्म का विलन नहीं है. But I did the film because I really loved the role and I was looking forward to the opportunity of working with Abhishek and Uday. And I must say it was a great experience. दोनों के साथ काम करके बेहद मजा आया. और दोनों के लिए मैंने एक नाम भी रखा है, याजूद माजूद. आई थिंक दिमागी तौर पे तो हमेशा विलन परेशान करता है, लेकिन इस बार जज्बाती तौर पे भी परेशान किया होगा. हाँ? वो तो है जी. देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि धूम इज नॉट अ कन्वेंशनल, धूम 3 इज नॉट अ कन्वेंशनल कॉप्स एंड रॉबर्स. हमारे धूम में जितने भी नेगेटिव वाले होते हैं वो ज्यादा है नहीं हमारी फिल्म में. अगर आप धूम 2 देखें तो ऋतिक हैड अ वेरी गुड रीजन फॉर डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग. धूम 3 में भी जैसे आमिर ने कहा जज्बात काफी हैं. जय दीक्षित एक पुलिस अफसर है एंड हिज जॉब इज टू कैच द थीफ. वो जज्बात में पड़ते नहीं हैं, बट हिज जॉब इज वेरी क्लियर. किसी ने कुछ बुरा किया है, मैंने उन्हें पकड़ना है, एंड दैट्स हिज ओनली फोकस. और वो ज्यादा वो उनको हिलाना बहुत मुश्किल है. Aamir, could you please tell us something about your relationship with Jackie Shroff here, upstairs? Here. Hi. Well, Jackie is a close friend of mine. I really love him. He's a great guy. In the movie, he's a great guy, and he's fantastic. Oh, in the movie. Yeah. वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उन्हें सालों से जानता हूँ. Sorry, ये I didn't हमारा read the question relation है. properly. In the film, we shouldn't tell you all this यार. ये सब बोलना नहीं चाहिए ना. हाँ, आप फिल्म देखो यार. He's playing your father. You should see the film. I mean, you should check. You should guess from the promo, but I shouldn't tell you specifics. ये जो धुन है टिपिकल धूम फिल्म की, हाँ, बहुत कमाल की है. तो ये कितनी डिफरेंट होने वाली है 3 में? मतलब नहीं, I hope different नहीं होगी यार. आप क्यों चेंज कर मानेंगे? तो इसमें बीट्स वगैरह एक्स्ट्रा डलती हैं तो नहीं, उसका अलग हर दफा अलग अंदाज में आती है, but definitely the tune itself, the core tune should be the same because that's the tune that we identify with. हमको मजा आता है जैसे ही वो ट्यून आती है. You know, your blood starts racing. I think my favorite villain was Pran Saab because when he used to come on screen, I used to get really frightened. हम लोग डर जाते थे. And he was one person who I think was, is the ultimate villain. And then there have been some amazing actors that India has seen as villains. Amrish ji, Prem Chopra ji, Manmohan, Madan Puri, Gabbar Singh, so some amazing villains. Aamir, since you play a character which is in the circus, do you feel that in real life, do you think that life is also like a circus somewhere? It's like up and down. जीना यहाँ, मरना यहाँ. Definitely, I think so. Aamir, there's a dialogue, circus वाला हूँ, सिर्फ आंखों को नहीं मौत को धोखा देता हूँ रोज. Do you think that is one of the dialogues that will become quite famous in terms of the dialogue bazi bit? I don't know yaar. I hope so. Did you like it personally? I hope so. Yeah, it's a great line. It's a great line. Guys, thank you so much. And before we end, I want to thank Victor for having written such a wonderful script. आप लोगों ने तो इनको कोई सवाल ही नहीं पूछा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप फिल्म देखेंगे तो प्रोडक्शन डिजाइन और कैमरा वर्क इतना कमाल का है that you will be flabbergasted. Thank you so much. Thank you. Thank you.